हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, टी.एस. एलियट एज अ क्रिटिक को। ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, तो आप वहाँ पर यही सेम आंसर लिख सकते हैं। ये बहुत ही इजी वर्ड्स में लिखा गया है और कहीं भी फिट आ सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जौन सी बुक से मैं पढ़ा रही हूँ उसका नाम है लिटरेरी क्रिटिसिज्म 2, जो कि पेस सीरीज की है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। थॉमस टर्न एलियट। थॉमस टर्न एलियट का फुल नेम है is considered to be one of the most influential critic of the modern era। ये मॉडर्न एरा के बहुत ही असरअंदाज एक क्रिटिक थे। He is widely influential for his famous essay Tradition and the Individual Talent। इनका एक बहुत ही फेमस ऐसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और लोग इनको मतलब इनके वर्क्स को पढ़ते हैं और इनसे इंस्पायर होकर लिखते हैं। ठीक है। The essay influenced the emerging theory in the literary theory known as new criticism। और ये जो सा इनका वर्क है, ये ऐसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये इस कदर इन्फ्लुएंशियल था कि इसने एक नई थ्योरी की बर्थ की जिसका नाम था न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म था क्या बेसिकली, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं करना चाह रही, पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ। इसमें ये था कि जो सी ट्रेडिशनल नॉर्म्स चली आ रही थी उन सब से हट कर एक अलग चीज़ जो उसको लेकर आना, वो न्यू क्रिटिसिज्म में था। इसमें वो ये कह रहे थे कि जो क्रिटिसिज्म है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, लेकिन आपने अपनी इम्पर्सनल थॉट्स को निकाल कर क्रिटिसिज्म करना है, और वही क्रिटिसिज्म न्यू क्रिटिसिज्म था। Hence, Eliot is also sometimes referred to be as the anticipate of new criticism theory। He has contributed critical terms such as the impersonality theory, subjective correlative, unification of sensibility and autotactile text। इनने और भी काफ़ी ज़्यादा टर्म्स के साथ एसोसिएटेड थे टी.एस. एलियट, जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद आगे चले, हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को हम लेकर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन एलियट ऐसे द मेटाफिजिकल पोइट्स, या यहाँ पर कुछ इस तरह भी आ सकता है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। तो उसके लिहाज से हम लोग बताएंगे उनके वर्क का रेफरेंस देके। ठीक है। Beginning begins in English writing, we seldom speak of tradition। English writing में हम tradition के बारे में बात करते हैं। The poise and authority of Eliot critical voice, backed up by his masterful performance as a poet, soon made tradition a key topic for poets, critics, intellectuals, teachers of literature in the academy। Two of the canonical texts of modern Anglo-American literary criticism, F.R. Lewis' Revelation, Tradition and Development in English Poetry 1956, and Clint Brock's Modern Poetry, The Tradition 1939, were expansions of Eliot ideas about tradition, and many other books were similarly based on the terms that he had articulated. For Eliot, each poem exists within the tradition form which it takes shape and which it in turn redefines. Thus, tradition is both some time to which the poet must be faithful and some time that he actively makes. Novelty emerged out of being steeped in tradition. Some late critics, such as Harold Bloom, have criticized Eliot as a weak poet critic because of the priority that he assigned to tradition, but in doing so they overlook the extent to which the poet challenges and revises the tradition to which he delves. What happens when a new work of art is created?
He stressed what happens when a new work of art is created is something that happened simultaneously to all the works of art that preceded it. Eliot 1092. Eliot has also been criticized for picturing tradition as a variously astimilous order of living wool and ideal order and the mind of Europe, thereby idealizing its conflicts, contradictions, and omissions. Eliot's next essay, The Metaphysical Poets 1921, is another central work in the history of modern criticism. Almost as soon as it appeared, the difficult 17th century metaphysical poet John Donne, Andrew Marvell, and the contemporaries, whom Eliot described as more often named than read, and more often read than profitably studied, become models of good poetry. Eliot's essay is condensed in its argument, highly suggestive and extraordinarily ambitious. To conclude, T. T.S. Eliot contribute to literary criticism is both substantial and enduring. Though his profound understanding of literature, language, and culture, Eliot revolutionized the field of literary criticism and left an inevitable mark on the way we interpret and appreciate works of art. His critical essays, including The Tradition and The Individual Talent and The Scared Woods, continue to shape the way we analyze and understand literature. Eliot emphasized on the importance of tradition. His exploration of the objective correlative and his insight into the complexities of modernism have made him a revered figure in the realm of literary criticism.